All right, so we're going to get started with big smiles on your face, folded hands. We say it out loud. We say, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੀ. Do we all understand if somebody was to come up to you and ask you why do we do those things? Do we remember any part of that? How many of you actually remember what we talked about? Matha Teka. How Matha Teka? Yeah, to give up our bad thoughts. ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡ ਦੇਣੇ. And what do we get in return? Honey? Good thoughts. ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨੇ. ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਗੁਰਮਤਿ. ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ word ਹੈ. There's many times Guru Ji referred to as Gurmat, Guru Wali Mat, Guru Wali Soch, Guru Wali Vichar. And what is that? Whatever the Guru says, we listen and then we try to follow it. And that's what we follow. Wo hai Guru Di Mat. And when we follow our own mind and our own thoughts, what is that called? That's called man-mat. And that's called man-mat. And whoever's got the man-mat becomes a manamuk. Whoever's got the gurmat becomes a gurmuk. Gurmukh is a good Sikh. Manmukh is a bad guy. Okay, I had some of your questions. So we understand why we do Prakarma? Prakarma ka pagkabi? Kino yada? What does it symbolize in Hanji Pasuk? It's like a tire. If somebody come to us, we are going to be applying it, we are prepared about it. Ki karna pauna, ki dasange. Guru is the center for my life. Just like the earth goes around the sun, even Tapti sun, Surya de dware geda landi hai. It's bound by that planetary motion, the forces of attraction. A Sikh's life revolves around the Guru's teaching. Udain Sikh di jehdi zindagi hai, Guru diyan sochan, Guru de upadesh nu pura bana ke ude aale duale ghumdi hai. And I forgot to actually tackle one of those ones. Why do we go around this way, not the opposite way? ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੱਬੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. What do you say to your friend? There's an old saying, you say, you're my right hand. ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਖਾਣ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਧਾਰ ਹੋ. You're the strong support, and that's what symbolizes. ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ. There's a teaching in everything a Sikh does. Now I got a bunch of questions here from you guys. There's some other ones. The first one was, why do we eat prashad? Prashad kyun shakde hain ya prashad kyun lene hain? I think that was your question. Who had that question? Somebody wrote it down and pass it on. Can anybody tell me why do we do that? That's all.
many actually like to eat the prashad every day? Good. There again, Guruji gives us a guidance somewhere out there. First of all, how many of you actually have to chew it? Or you find it hard to chew? Really? It's easy. First of all, it's easy for everyone to eat, whether you're a little baby or you're 100 years old and you don't have teeth. Sare barabar nainu shak shak. So it's easy. Number two, when we go back to the olden days, there used to be a lot of discrimination, and there are some parts of the world there's still discrimination. एक बड़ा व्यतिकरा हुंदा सी जात पात दा. And in India they're still considered as 4 classes: the religious ones, the warriors, the workers, and the other ones that call the lowlifes or the untouchables. हिंदुस्तान दे विच अज भी वही वर्णमंड चलदी है, ब्राह्मण, खत्री, वैश्य, शूद्र. And the ones that were considered as the untouchables, they didn't have the right to eat or drink out of the same places where supposedly the higher class was eating or drinking. And as a matter of fact, just a couple of months ago, they were actually burning down villages in India. कुछ महीने पहला दी खबरां पिंडां नूं अग ला दित्ती सी, कहंदे सी जी शूदर ने इन्हां ने साडे जिथों असीं पानी पीना सी उधरों उपरों आउंदा पानी पी लिया सी, साडा पानी भ्रष्ट कर दित्ता, पिंडां नूं अग लाउणी शुरू कर दित्ती ते पी रवां. But what does Guruji tells us? Guru Pasha तो सानूं दसदे भी सारे बराबर नहीं, we're all equal. That's why Guruji said, when you come to the Darbar, I'm going to show you how to join in the brotherhood and the sisterhood. ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ. We're all going to sit on the floor, all equal. We're going to get served out of the same plates and the same bowls without any discrimination. ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਖਲੇ. ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਆਣਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੈ. That's what it symbolizes. ਕੱਲੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. ਬੜਾ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਛਕ ਸਕਦੇ ਨੇ. That's the beauty of Sikhism. ਇਹ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਿੱਖੀ. No other religion does this. ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. So I hope you understand ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣੇ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ. For everything we do in the Gurdwara, there's something to learn from every single one of those sections. Dujja Swal, see, who will tell us who is our next guru? Must have come from a very young student. Sanu kaun dassu sada agla guru kaun hai? Who do you think is going to tell us? Dasso. Any? आयस के हमका सानू मान हुंदा तो बच्चे दस रहे साडा होर कोई अगला गुरु नहीं होना. गुरु साडा इक्को ही सी, इक्को ही रहा ते इक्को ही रहना. There was only one guru at all times. ਆਪਾਂ कहते ना आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी भी सच. जे अकाल पुरख है तो गुरु भी एक है. कई बार सानू लेखा पैंदा जो नाम चिते करते 10 गुरु साहिबान एक समय ते एक गुरु ही सी. इसे करके अरदास विच कहंदे 10 पातशाहियां दी जोत, 10 गुरुआं दी जोत नहीं, 10 पातशाहियां दी जोत. Because Gurbani says ikka bani ek gur ikko shabad vichar. There's only one guru, there's only one bani, and there's only one message. सिर्फ एक नाल जुड़ना है.
So Guru Granth Sahib Ji is our eternal Guru. ये साढ़े सदीवी गुरु ने, इस तो के किसी देतारी ने, किसी भी होर ग्रंथ ने, किसी भी होर लिखाई ने साड़ा गुरु नहीं बनना। साढ़े गुरु ग्रंथ साहिब जी वे केवल साढ़े गुरु ने, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। So I hope that clarifies it. Another question: when, who, and what made the first Gurdwara? Kadon, kine te kine सारा नो पहला गुरुद्वारा संसार दे विच बनाया सी। Does anybody have any answers? Any guesses? दसो। जो सवाल पूछते हैं थोड़ी खोज भी करेगा। हाँ जी? हाँ? God. I haven't seen him yet. I know he's inside me and I see it in your eyes. हाँ जी? SIRI Harimandir Sahib. That's a good guess. Honey. चलो आज इतना ही सोचना है कि मैं तुम आंसरी दे गया तो फिर तुसी के भी भूल जाने आप लॉजिक नाल देखना है। गुरुद्वारा किने बनाया हुआ है? Who would be associated with a Gurudwara? I need the red shirt. Guru Nanak Dev Ji. Guru Nanak Dev Ji का क्योंकि सिक्खी का प्रसार करना है, he wanted to teach people how to become true Sikhs, सच्चे सुच्चे सिख के बनना है। सिख बनने वास्ते गुरुद्वारे की लोड़ है। We need a Gurudwara, and if you need a Gurudwara, then the first Guru must have installed one. Well, let's face it, who was the first Sikh? We know the first Guru. Who was the first Sikh? Listen. Shri Guru Nanak Dev Ji was the first Guru, but there was somebody who was the first Sikh. Bebe Nanak Ji. When Ji ne Sikh बनना है, Guru के द्वार पे भी जाना है। Guru भी पहला, Sikh भी पहला. Are we starting to get somewhere? कुछ सोच बनती है। पहला गुरुद्वारा गुरु नानक पातशाह ने बेबे नानक जी दे घरे सुल्तानपुर लोधी च बनाया। सब तो पहला संस्थान का गुरुद्वारा। गुरु भी उत्थे है, गुरु ने सिख बनाए ने, वो जिथे सिख बनया वही गुरुद्वारा। And that was in Sultanpur Lodi. I hope answers that question. इतना सोच के लॉजिक दे नाल इन सवालों के जवाब सीखने। We can't memorize them. Does anybody have any other questions? Yes or no? Okay, we were going to start a little bit of a quiz yesterday. And no cheating and no peeking. Close your eyes. Oh, you're all listening. सवाल आप कर रहे हैं तो लड़ीवार बहुत ही काफी सौखे ने, पर ज्यों ज्यों आगे बढ़े जाने ने वो फिर थोड़ा 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 भी पता लग रहा है। चलो मैं थोड़ी ये बुक दी है, मैं पूरे विचों करा दूंगा, नहीं किसी चीज का लग जाना, ठीक है? सौखे सवाल ने मैं ask you at random. Sikhi da jehड़ा मुढ़ला, the very basic concept of Sikhi, or Guru Granth Sahib Ji started, happens from where? कितों शुरुआत हुई है Guru Granth Sahib? दसो? हाँ जी? एक ओंकार तो लेके कितों तक क्या अपना basics, जिहड़ी सारे Guru Granth Sahib Ji दा आधार बननी, हाँ जी? Gurprasad. Jap is the heading of the body. Okay? You know, Amul Mantra bhi kehne, Mangala Charan bhi kehne. That's the entire definition of the word God, Akal, Purkh, Vaheguru, Allah, Ram, Hari. Those are different names. जे किसी चीज नूं तुसीं जानना हुंदा, पहलां उहदे बुक दे विच सब तो पहलां तुहाडे कोल
लिखा होंगे भी किस चीज़ बारे गल करनी है। फिर बुक के अंदर सारा कुछ विस्तार है। इसी तरह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब in the beginning of the Guru Granth Sahib Ji, Guru Ji tells us who is God, what are his qualities, and the rest of the Guru Granth Sahib Ji tells us how do we get to know him, how do we become friends with him, and how do we get to meet him. Guru Granth Sahib de vich vi pehla Akal Purkh di paribhasha hai, baki sare Guru Granth Sahib Ji de vich sikhya hai कि उस अकाल पुरख की पछाण किवें करनी है, उहदे नाल सांझ किवें बनाउणी है ते उहदे नाल मिलाप किवें होना है, एक मिक किवें होना है। पर पहला सानूं उहदे विच उहदे गुण दस्से। सो एक ओंकार तो लैके गुर प्रसाद तक। नेक्स्ट क्वेश्चन तुसीं काफी नहीं याद कीते 10 गुरुआं दे नाम। ओके, I'm going to ask you at random 7 guru दसो। Ali Sri Guru fifth Guru Guru Arjan Dev Pasha। इन्हां दा बेटा अपन सारिਆਂ ਨੂੰ ਨਾਂ इदां याद होने चाहिए क्योंकि इन्हां तो बिना साडी सिੱਖੀ नहीं है। ठीक, दूसरे पाशा तुसीं दसो नहीं गुरु अर्जन देव जी दूसरी पातशाही गल की। गुरु अंगद देव जी, गुरु अंगद देव जी पहला नाम की सीगा? भाई लैणा जी। तीसरे पातशाह गुरु अमरदास जी, उन्होंने पहला किस नाम नाल जाणदे सीगे? What was his previous name? We used to call him, still registered in history. How do you see this? Any? Name? Anybody else? Guru Amardas Ji ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਸੀ? There's a respectful word on the first, and there's a little bit of almost like a slangish name. Baba Amaru. Who is the fourth Guru? Guru Ramdas Ji. Guru Ramdas Ji ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ? ਦੱਸੋ। ਭਾਈ ਜੇਠ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਲ याद रखना है क्योंकि जो the reason I'm telling you दसन का वो कारण है कि जो भाई लैणा से उदों साडे गुरु नहीं सी। भाई लैणा नहीं पहला सिख बनते फिर गुरु बनते, तो जो गुरु बनते गुरु अंगद बनते। So we have nothing to do with Bhai Lehna's life, we only have guidance from Guru Angad Dev Pasha. Was Bhai Lehna Ji a born Sikh? Yes or no? Did he become a Sikh? So how do you become a Sikh? जन्म तो Sikh नहीं सी, तो Sikh बने कितना? हाँ जी। गुरु नानक पातशाह को आके गुरु नानक पातशाह तो बाणी सीखी है, बाणी पढ़ी है, बाणी का उपदेश है। He learned Gurbani and he adopted that in his life. अपने जीवन दे विच धारी, फिर गुरु वर्गे बन गए। पंजां प्यारिਆਂ ਦੇ नाम दसो। Who was the first one? Bhai Daya Singh. What does that name signifies? What does that mean? And kindness, daya. Who is the next one? Yeah. Bhai Dharam Singh Ji. And then we're going to connect them all. Who is the third one? Would you put it? Anybody else? Let's see this one. Any? Are you sure? I got a different sequence. By Gurmat Singh. Who is the fourth one? By Mohkam Singh. The last one what I get is by Sahib Singh Ji. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਣ ਉੱਠੇ?
भाई दया सिंह जी सारे बोलो सारा पहले पंजाब प्यारे जो सारा पहले प्यारे केड़े सीगे भाई दया सिंह नेक्स्ट वर्ड्स भाई धर्म सिंह नेक्स्ट वर्ड्स भाई हिम्मत सिंह जी then came भाई मोहकम सिंह जी फिर भाई साहिब सिंह जी now let's look at this even पंजाब प्यारे दे नाम दे विच गुरु सिੱਖਿਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ सब तो पहला दया उठी सब तो पहला even in our life we have to become kind पहला मन दे विच दया उठूगी फिर की बनोगे who is the next one who is the next one प्यारे भाई धर्म सिंह जी जे दया उठी तां धर्मी बने तौल धर्म दया का भूत गुरबाणी में भी दर्ज कर दिता धर्म जिहड़ा दया का पुत है so you must be kind to begin with in order to become religious जे मन दे विच दया अनु धर्मी हो सकते जे धर्मी हो गए तो फिर की अपने कोल आउगी who is the next one any हिम्मत धर्मी बंदे हमेशा हिम्मती बंदे होते okay they are courageous सिखां दे विचों warriors इसे तरीके शहीद पैदा हुए ने योद्धे पैदा हुए पहला दया हो दया तो फिर धर्मी बनोगे धर्मी होवांगे तो हिम्मत होगी फिर की होगा who is the next one ani what does that mean इस नाम दे विच भी सिक्खिया है you break the name down into two parts piche anybody two words name mo te kam mo means attachment kam means कट गया खत्म हो गया जिन्हां दी इस दुनिया दे नालों लगन टुट गई लगन कट गई जदों हिम्मत आई ना फिर जिहड़ियां चीज़ां ने दुनियावी उन्हां नालों फिर सिख दा नाता टुट जाता है सेवा दे विच लग जाता मोहकम ते जदों फिर माया नालों नाता टुट गया फिर की बनिया अखीर ते जाके साहिब बन गया फिर साहिब दे नाल मिल गया अकाल पुरख साहिब मेरा एको है भाई एको there's only one word पहला दया मन दे विच आई फिर धर्मी बनिया धर्मी होया तां हिम्मत आई हिम्मत हुई तां जिहड़े मोह माया दे टुट गए फिर जाके अकाल पुरख दे नाल साहिब दे नाल एक होया that is the symbolism गुरु ने हर एक चीज़ दे विच सिक्ख्या पाई हुई गुरु दी शमशीर दे विच गुरु दी कलगी दे विच गुरु दी हर एक चीज़ दे विच सिक्ख्या there's every single thing that we see about the Guru, we study about it, we think about it, it's got good teaching and guidance. We just don't see it that way. Who laid the foundation stone of Sikhism? Sikhi di nahi kina rakhi sa. Ani Guru Gobind Singh Ji? Any? Picture? Sikhi. Guru Nanak Dev Pasha. That was a tricky question. Sataya question. Siddhi tricky question. Sikhi di शुरुआत Guru Nanak Pasha तो होंदी है इसे करके सिखी दे धर्म की जिहड़ी नींव है वो भी Guru Nanak Pasha ने ये दरबार साहिब का नींव पत्थर किने रखा सी नींव The foundation stone was actually laid by somebody else, very prominent figure. Miyami. Okay. Guru Nanak Pasha the very तो सिखां ने गुरुद्वारे बनाने थे तो जो दरबार साहिब की construction वास्ते the overall plans were laid out from the 4th Guru onwards, but the construction started with the 5th Guru, and Guru
Guruji gave that honor to a saint who was a Muslim, Singhia. So when you think, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ. Is that really true? It isn't true. ਇਹ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਨਾ ਉਦੋਂ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ. ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ, ਚਾਹੇ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. There is no conflict with any other religion, whether it's Islam, whether it's Buddhism, whether it's Judaism. Guru Nanak Pasha ne ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ. He called us a one big family and we're all brothers and sisters. ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸਾਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤਾ. ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ. ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ ਨਿਕਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਉਂਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. I was listening to Katha 2 days ago. ਸਾਨੂੰ and we learned कि खालसा हमेशा तैयार पर तैयार रहता है. A Khalsa is always prepared. Prepared for what? कितना तैयार पर तैयार रहता है? किस चीज ना? Does that mean he just wears his warriors दो कृपाना पा के सारे शस्त्र लाके he's ready to kill? Is that what it means? Yes or no? No. ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਖਾਲਸੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੁਰਮਤਿ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇ. You should be able to answer any question that comes across as long as you know Gurbani and you know your history. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ. ਇਹ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ. ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿਆਰ ਹੈ. It's ready for discussion. It's ready to answer any questions. ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ. ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, you're going to be asked those questions. That's why you're prepared 24/7. ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਚਾਰੀ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ. ਹਲੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ. Those are basic concepts in Sikhism. I have बहुत simple to simple question पूछे जा रहे हैं. Guru Nanak Dev Ji, I know we were talking about the caste system, जात पात के मुताबिक कई नीच ने. गुरु नानक पातशाह ने नीच किहनूं किया? Who is the low life according to Guru Nanak Dev Ji? ਦੱਸੋ. ਬਿਲਕੁਲ. ਜਿਹਦੇ ਚ 5 ਔਗਣ ਨੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਮਾਣਿਆਂ ਚ ਨੀਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. Not according to where they're born, what family they're born in. ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲੀ ਨੀਚ ਹੋ ਗਏ. Guru has called them donkeys, monkeys, dogs. Guru ने पानी च उन्होंने खोते, कुत्ते, बांदर. It's not that Guru is swearing. Guru गाला नहीं कर रहे. Guru ने सानू दस्सिया तुहाडे च वो आदतां आ गईयां जिहड़ियां उन्हां च. So नीच दा पता लग गया कि उच्ची जात वाला कौन है सिक्खी दे विच? हां ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ. ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਹਮਾਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ. ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਾਤ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੇ ਆਪੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਬਣ ਗਈ. Otherwise there is no caste system in Sikhism.
गुरु नानक देव जी ने गुरता गद्दी किन्ना दी सी? Who did the Guru Nanak Dev Ji give the Guruship to? Who was the next one? Sri Guru Angad Dev Ji. तुसी सारा ने रटे मार के याद किया, पर जब सवाल तो पुछते जा फिर तुसी थोड़ा सोचा नहीं पाया। Why did Guru Angad Dev Ji get the Guruship? बिल्कुल ठीक, क्योंकि गुरु नानक पातशाह के जिहड़े अपने बेटे सन उन्होंने उन्होंने गल नहीं मनी, इस करके गुरु नानक पातशाह ने गुरु अंगद देव जी को दी गुरता गद्दी। In simple words, Guru Nanak Dev Ji's own sons, they didn't follow his hukum, they didn't listen to him. उन्होंने सिक्ख्या ते नहीं तुरे असली माने दे विच, क्योंकि गुरु अंगद पातशाह ने गुरु नानक पातशाह का हुक्म मन्निया, सिक्ख्या मन्नी है, इस करके गुरता गद्दी गुरु अंगद पातशाह ने दी। All comes back to the same notion, we must listen to a guru. जो गुरु कहता वो मनना, फिर सिख ते गुरु दे विच कोई फर्क नहीं रह जाता। There is no difference between the Sikh and the Guru, and that's what's stated in the Gurmat. It's written in Guru Granth Sahib. We cannot become the Guru, but we can become the same as the Guru, like our Guru. Sikh Guru नहीं बन सकता, पर Guru वर्गा बन सकता है। गुरु अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी को रह के कितने साल सेवा की थी? How many years did he spend with Guru Angad Dev Pasha? Any? 12 साल। ताने मां पे बच्चों को पूरे नहीं सिखा दें, मां सिखा 12 साल। इकट्ठे बोलो एक बार कितने साल सेवा की तीसरी? What was the age of Baba Amaru Ji when he came to Guru Angad Dev Ji Pasha? Just a guess. 73 is when he became the Guru, but he came before that. So the last answer when he said 12, it's actually 11. So if he became the Guru at 73, then what was his age when he came to Guru Angad Dev Ji? Simple math. 62. 5 साल की उम्र दे विच आई सी। So इत्थों सानू सिक्ख्या मिल जानी चाहिए है। जिन्ने भी सियाने प्याने, चाहे वो किते भी बैठे हों, चाहे वो सोसाइटियां च ने, चाहे मालां च बैठे ने, कदे भी कोई देरी नहीं है गुरु के दर ते आउण दी। हर वक्त गुरु प्रवान करदा। गुरबाणी दे विच शब्द भी लिखे हुए हैं कि शेख फरीद के भगत कबीर जी का एक श्लोक आउंदा कि जे काली दाड़ी वेले नहीं रब चेतेगी तां हुण चिट्टी दाड़ी वेले कदों होना। पर गुरु अमरदास पातशाह ने इसे करके उहदे अगे एक होर श्लोक दर्ज कीता कि काली होवे चाहे चिट्टी होवे, साहिब हमेशा सदा मौजूद है, हुण जदों भी आके मिल। सो साडे दादियां परदादियां वास्ते भी साडे कोल इह हुक्म है गुरु पातशाह। Guru Gobind Singh Ji की गुरगद्दी के बैठने समय उम्र कितनी सी? How old was Guru Gobind Singh Ji when he became the Guru? 12 is wrong answer. What year was Guru Gobind Singh Ji born? 1469? No. Guru Gobind Singh Ji किहड़े साल दे विच तुसीं गुरबाई खानी? 1669 is wrong again. हाँ जी, 5 साल ही नहीं। दसो 1666 1666 दे विच दसम पिता दा प्रकाश। And when did Guru Tegh Bahadur Ji take Shahidi? What year? किहड़े साल दे विच?
ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ 1675 1675 ਦੇ ਵਿੱਚ that makes Guru Gobind Singh Ji how many years old? 9. So ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਿਤਾ ਗੋਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ he was 9 years old. See, ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ. We should learn because ਹੁਣ ਮੈਥ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ 6 9 15 6 9 15 ਕਰੀਏ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਆ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ then we kind of defeated the purpose of the education. ਤੁਸੀਂ ਮੈਥ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ but we should remember our Sikh history. It's critical. It's very important. ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ? Who was monumental in getting the ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ arrested? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ. Gangu Brahman. And where did the oldest Sahibzadeh took Shahidi? But ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. What does a gadi means? Any? A car? Karan to usme hai नहीं. गड़ी की ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੋਰਟ? ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? Is it made out of brick and mortar? Concrete ਦਾ ਬਣਿਆ? ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ? ਹੈ ਛੋਟਾ ਕਿਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਗੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ. ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ it was made out of mud. ਮੜ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ. ਕੱਚੀ ਗੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ. And how many Singhs were there with Guru Gobind Singh? How many took Shahidi? How many took Shahidi in Chumkau di Gadi? 40. And who helped Guru Gobind Singh Ji leave that and took him out of danger? Who were those two people? Two brothers. Kede do pai sige? Ani. ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਥੋੜੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ. ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਲਈ ਸੀ. There were two Muslims. Muslims brothers, they picked up Guru Gobind Singh Ji on a cot on their shoulders and they said, he's our highest saint, the Muslim saint. Which of that be that? One of the Naki sige. This Ghani Khan and Nabi Khan. Those were the two brothers. Ani? But now that pamphlets we're going to try to get you one this booklet. How many of you can actually read Punjabi? You know the uncle that's doing the recording on the back? He's prepared all this money and he spent a lot of time in it. And we're going to try to get you a copy for each because it's very useful information. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਇਆ ਪਰ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ. And I hope, like I said before, if you have emails, we will probably pass out a page here tomorrow. You guys can write it and I can make slides out of the same information and we can send it out. And then you can actually even play a game here. It'll pop out the questions at random and give you the answers. You can test your own knowledge. ठीक है? So बाकी the questions अपने को काफी ने. We're going to continue with those ones. And tomorrow is the movie day, so don't be late. And the movie that we're going to watch tomorrow is The Rise of the Khalsa. Okay?
ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਜੜ. Okay, so we're going to end this class here today, right here, right now, with big smiles on our face, with folded hands. We say it out loud. We say, Vaheguru Ji Ka